वाला डिटेल्स में इसका वो भी नहीं आता है। Mungkin itu namanya ya, walaupun saya naik ya pakai tiket. उसमें Ini, शेयरिंग भी हुआ था। तो शेयरिंग में हमको इन्फॉर्मेशन मिला था। तो वो लोग का हिसाब से तो सब कुछ रिप्लाई दे दिया तो उसके वो लोग की हो गया ना। ओनली लेबर नहीं बोला क्योंकि उस चीज को और बोलने के बाद भी वही चीज सेम चीज कर रहा है सर। लेबर स्पीकिंग बोलेगा इसलिए आपका पास आया। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट मेरे पास है तो मेरा हिसाब से ये सही नहीं है बोल के ना। इस पर ये गाइडेंस गाइडलाइन ये नोटिफिकेशन का ये डिजिटल नोटिफिकेशन का हिसाब से ना सर कुछ गाइडलाइंस और पब्लिश हुआ है हिसाब से ये प्रिंटेड में यार dia yo persen. Sure, persen. If you want to stick, after the order of the person, like that here, but about the information, some other information are yet to be provided for the when is appealed to the commission. फॉर्म में है आपके पास में मेरे पास इसमें से बस मांगा है पहली सर्टिफाइड सैंक्शन मॉडल कॉपी है तो दिया है आपको इसको दिया है सर तो हम जैसे मैं कर सकते हैं हाँ मैं आपको पूछेगा तो we have to note which of the information are not given नंबर वन तो दिया है ना हाँ जी सर ये पहली सर्टिफाइड एलओसी कॉपी में सब्जेक्ट मेंशन देखो मिला है सर क्या है कि बहुत ये रिसीव बोल के लिखा हुआ है एलओसी हाँ so that means he might not have received or else so how can a responsible officer write like that नहीं सर इसको आपको ये प्रॉब्लम नहीं है हमको चले प्रॉब्लम तो नहीं है पर मेरा ये काम अभी चल रहा है चल रहा है सर और ऊपर से ये काम जो 2020 to 23 का ऐसा है अभी तक तो सर एलओसी तो रिलीज करना चाहिए मेरा हिसाब से नहीं तो हर फाइनेंशियल ईयर में तो गवर्नमेंट का कुछ देगा नहीं तो वो भी काम कहाँ से करेगा मेरा that हिसाब से means number two is not given to you ना ये रिप्लाई दिया है कि नो टिप्स जैसे ये बस फर्स्ट पेज जो रिप्लाई कॉपी है ना कौन सा डेट को वो रिप्लाई किया इसका डेट सर आई थिंक ये जो 2024 का सितंबर को 28 सितंबर को रिप्लाई किया है 28 September थर्ड का वो मिला है यूसी को रिकमेंड just so you know work not yet completed every काम वो यूसी को मैं देता हूँ ये जो भी मैंने फंड रिलीज हुआ है इसका भी तो इसी को यूटिलाइजेशन तो दिखाना पड़ेगा ना भले ही आप 100% यूटिलाइज नहीं किया हो इतना करोड़ का यूटिलाइज हो गया इसका तो सर कागज बनता है वो आपको नंबर टू में नॉट प्रोवाइडेड में हाँ का उसको अलाइन किया होगा उसी से अलाइन उसी हिसाब से होने से तो यूसी तो होगा नहीं और ये सीटीसी एनआईटी का वो दिया आपको एनआईटी दिया था न्यूज़पेपर वाला भी दिया ना न्यूज़पेपर वाला सर उसमें एक रिप्लाई दिया है कि नोट एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द ई टेंडर एज पर लेटेस्ट ऑपरेशनल सीपीडब्ल्यूडी पैटर्न ऐसा लिखा हुआ तो सर ये जो अरुणाचल का जो नहीं है सर जो ये डिस्ट्रिक्ट बेस एंटरप्रेन्योरशिप है सीरियस नहीं ये एडवर्टाइजमेंट का जो है सर इसके सब तो देना चाहिए जो भी है
गवर्नमेंट का जितना भी मन है, ये पब्लिकेशन जितना भी एक काम जो भी हो रहा है, उसका तो पब्लिक को अपडेट के देने के लिए तो दिया है। नहीं नहीं, आज कल कोई भी मतलब ये डिजाइनिंग स्कोप ऑफ वर्क की प्रोजेक्ट दिया आपको। इसमें सर ये स्कूल को दिया हुआ है, डिजाइन को नहीं दिया सर। उन्होंने इसको को मेंशन करके जैसा हो ये सब करके दिया है, और ये डिजाइन को दिया है। मतलब ये किस तरह का काम होगा ये वर्क, होगा फिर दिया हुआ है। हाँ नंबर 7 में वर्क स्पेसिफिकेशंस दिया। दिया है सर, इसमें ऑलरेडी उन्होंने मेंशन करके दिया कि वो गाइडलाइन को फॉलो डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय टेंडर पार्टिसिपेंट और टेक्निकल बिट करें। किया ना। इसमें उन्होंने लिखा है कि थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कंसेंट फ्रॉम द ओनर, ऐसे लिखा हुआ है। थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट होगा ही, हाँ, ये तो होगा। नहीं, वो तो हम ही बनता है, अगर वो नहीं, आता तो but have you been participated in the same tender? No, पर आए you have to be given. लेकिन अब जब बाहर से खड़ा होके वो आदमी लोग का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा। मेरा तो कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। तो मैं समझती हम लोग को सीरियसली काम है कि क्लास पे भी दिखाना है। नहीं नहीं, होने से फिर देयर आर सर्टेन लॉज, नो यू कैन नॉट। सर्टेन लोग आई सर ये चीज ऐसा है कि क्या में हम कोई उसका ये बिजनेस का कोई हम इसका हमने का चीज को हम मांग नहीं रहा है। कोई अपना सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट को तो नहीं मांग रहा है, और कोई पर्सनल जो फाइनेंशियल इससे जो उसका भी पर्सनली बिलोंग करता है उसे तो हमको लेते हैं बस। इसी क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड वही हम आपको बस उसी सब कुछ तो होना चाहिए क्वालिफाइड है क्या नहीं नहीं, है। लेकिन आपको ये नहीं बोल जाएगा। You have to be a participant in the tender to ask this documents of those firms. आउटसीडर को कैसे देगा? उसमें नहीं कोई नहीं लोकल सर, स्टैंड ही नहीं है ना। मेरा ऐसा तो इसमें तो अब एक इंटरेस्ट पार्टी होके यू कैन आस्क। सर इंटरेस्ट इसमें पार्टी नहीं एक भी होगी तो ऐसा आप नहीं है कि एक भी ऐसा गाइडलाइन नहीं मिलेगा कि हम जो इसको क्यों नहीं मांग सकता है, क्योंकि ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है बोलने से भी इसमें क्लियरली बुक का ऐसा तो क्लियरली मेंशन है कि इफ ये नेचर ऑफ आस्किंग इज या पब्लिक से ज्यादा रिलेटेड है, और ये जो अभी जो बिल्डिंग जो बन रहा है पब्लिक से ज्यादा, अरे जो रोड बन रहा है पब्लिक का यूसेज के लिए, तो उसको जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है पब्लिक के लिए काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से तो मेरा मांगने का एप्लीकेबल है इसमें। पब्लिक इंटरेस्ट इसी में है कि द वर्क हैज टू बी executed very properly. So whoever is executing the work, there are नहीं सर, authorities appointed to see those people, those firms that are qualified or no. So सर when a competent authority gives the works to a firm, that means he might have been qualifying all the required norms. नहीं सर, हमने वो चीज देखिए सर, हमने यह देखा सर स्किल नंबर मेरे कितने में हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, इसमें क्वालिफाइड फॉर दैट वर्क और नॉट, तो उसमें सर बहुत सारा ये चीज जो एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसलिए ये सब जो वेटिंग रहना चाहिए मेरा सर। और आपका जो कहना है कि ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, तो सर ऐसे पर्सनल पर्सनल करते रहेगा तो आज तक आप देख रहे हैं कि नारा लगन का हाईवे तो आप भी देख ही रहे, तो उसका भी तो ये option नहीं दिया है जो काम को देने वाला है। आज काम तो कंप्लीट नहीं होता है, तो वो लोग तो गधा गोरू को अप्रोच देना जो चीज को नहीं रहता है। अभी तो ऐसे कुछ ना रीजन की वजह से तो कुछ इंटरनल ये क्वालिफाइड नहीं होने का कारण से तो ये काम तो रुका हुआ है ना सर। तो लेकिन आपको नहीं मिलेगा जो जैसा डॉक्यूमेंट पीआईओ को सबमिटेड आने बाय दीजिए। टेंडर। नहीं, पीआईओ आने से भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं आने से भी नहीं मिलेगा। नहीं सर, किस किस इंफॉर्मेशन को नहीं मिलेगा उसको सर स्पेसिफाई नहीं करने नहीं, से भी अच्छा है। आप document submitted by tender participant for technical before right to take फाइनेंशियल सेक्शन का कुछ financial का नहीं मांगा भी है। technical को आप technical bit is those documents which make him qualify for the work. तो वही तो हमें तो करने मन है ना सर, क्वालिफाइड नहीं होकर ये काम क्यों कर रहा है, द वर्क इज डूइंग बाय अनक्वालिफाइड कंट्रैक्टर, तो ये चीज तो वेरी है ना सर। हाँ, सोचने वाला बात नंबर 8 को आपको नहीं दिया ना। है। जी सर, नंबर 8 तो नंबर नहीं, जो नेम ऑफ फर्म्स वो तो मिला होगा। सर दिया है। नेम ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर डिजिग्नेशन ये तो दिया होगा, मॉनिटरिंग द ये वर्क। चीज मेरा सब ये कुछ दिख रहा है, क्योंकि ये जो दिया है ये ऑफिस और भी ट्रांसफर हो चुके हैं, 1 ईयर होने वाला ट्रांसफर हुआ। नहीं नहीं, आपको ऑफिसर्स का नाम दिया है दिया है सर, तो दिया ही है तब तो। हमने ट्रांसफर हो न हो वो नहीं, यू हैव आस्क्ड फॉर द नेम ऑफ चल रहा है ऑफिसर्स। जो हम इस हम तो चलते रहेगा ना ऑफिस, तो चेयर विल ऑलवेज रिमेन द सेम।
आज यही है वहाँ ना इस ट्रांसफर होंगे होने से भी मतलब ही विल कम मैं वर्ड अभी विल गो तो ऑन मेरा सबसे बना अभी तो एक्शन पे गया और 50 भी हो गया सबसे it will depend upon on which time you ask you apply the application हमें जो लगता है क्या मैं ऐसी पोजीशन हो गई या चला गया उसका नाम दिया वो लोग उसका नाम दिया वही चीज से मेरा ऐसा तो ये करने लग रहा है क्योंकि अगर वो तब तक वहाँ का एक्शन होता तो सर तब देने सामने माता है सर ये चीजों को का एप्लीकेशन तो इंफिनिटम वो नहीं है चल रहा है मालिश किया था नया एक्शन आ चुका था तो इन्फॉर्मेशन जब हमने उधर फाइलिंग किया था ऑलरेडी क्या no but then see one thing is here no a responsible officer has replied to you in written no that's not joke so ये एक flimsy question भी है information भी है whatever they have replied to you and they have given to you the information that you have asked. Okay, the furnished the certified copy of contractor registration pass to passport. इसको दिया है 11 को इसको कुछ दिया है AND and security money को दिया इसको नहीं दिया सर कुछ ये इनको का जो कागज ना ये इररिलेवेंट वाला इन्फॉर्मेशन हमको सजेस्ट कर दिया है इसमें हम सर हम लोग को भी वही अपील करना था कि जो कागज हमने सीख ही नहीं किया वो कागज हमको क्यों फर्निश करना है वो चीज को आप लोग की सर उसको थोड़ा देख के पीआईओ को बोलने से भी अच्छा है क्योंकि जितना ये सर ये जितना पेजेस है ना लेकिन यार ये तो जरूरी है ये तो कोई भी मांग सकता है बिकॉज विदाउट दिस तो इसमें लास्ट टाइम भी न्यूज में एक निकला था एक सपा करप्शन that the security the BG was fake BG तो इसमें तो देना चाहिए सर इसको दिया नहीं है इसलिए हम उसका जगह में ये टेंडर का जो फीस है ना जो टेंडर फॉर्म का फीस का कागज हमको भर भर के दिया है सिक्योरिटी टैक्स वाला दिया आपको सर इसका तो कुछ लोगों को दिया है कुछ लोगों को नहीं दिया है समझ लो जरूरी भी नहीं है वो एफिडेविट स्टूडेंट ये दिया है ओके सर इसमें नेशनल बिल्डिंग मूवमेंट जो कभी ऐसे लिखा हुआ है सर ये तो मेरा हिसाब से तो let us hear from the PIO also they completed the similar works for the दिया आपको है acceptance letter भी दिया आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया और ये वर्क ऑर्डर गिवन वर्क टू ऑर्डर दे दिया document stated that among the list of information that were asked or serial number, the below serial related informations have been provided to him by the PIO, starting from serial number 1, serial number 41467, 8, yeah, 9, 10, 11, 13, 15, 16, and 17. And the rest of the informations applied by the appellant is given in his list. Number 2, 3, 5, 8, 12, 14. But not yet provided. After hearing the appellant, the commission observes that one PIOs should always bear in mind that attending the court or the information commission
is a statutory duty binding upon them to perform diligently without exempting from hearing when an appeal is made or preferred against them. And two, the claimant with the information which are not exempted under the RTI Act 2005, the appellant on time, particularly the order from the first appellate authority. Next, the appellant has been provided with incomplete information from the PIO. In the absence of the PIO, the facts of the field could not be discussed and hence the hearing be fixed on another day. The commission hereby ordered one, then it's summoned to the PIO in the next hearing on the given date without fail. What, and in the event of the failure of the PIO, in the event of the failure of the PIO, they came the next hearing. Regulatory action at the Act 2005 will be again. I think it's for a state of hearing need not be served to the appellant as he is present in person to the fix the next date of hearing on 31 July 10:30. 31 July 2020. Yeah. Second number 79 2025 taxes in favor of DFO Kellogg. Okay, online online है Sir, online है good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, RFO, hello. इसमें फर्स्ट एथलेट अथॉरिटी का क्या ऑर्डर है सर इसमें हम जब क्या हेयरिंग अटेंड करता है वो हमें कॉल करता है तो हम वहाँ नहीं जा पाए तो उन्होंने वहां से रिस्पॉन्ड कर दिया तो वो लोग का तरफ से भी वो लोग फर्स्ट एथलेट का आता है पोस्ट कर देता है केस पता डिस्टेंस क्या होगा हाँ डिस्मिस कर दिया हम तो वहाँ में यहाँ में हियरिंग था तो वहाँ में फिर वहाँ में तो ऐसा रूल तो नहीं है कि 2 बार अटेंड करने से केस को खत्म कर देगा
हम लोग यहाँ में 2 बार एक्शन होने से डायरेक्ट केस में हटा देता है, इसलिए यहाँ में जरूरी है बोल के यहाँ में अटेंड करता है। तो इसमें 4 मई में थोड़ा कंफ्यूजन है सर, मेरा पीएफ होगा सर, मेरा 3 एप्लीकेशन था, तो इसमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्या सर, थोड़ा ये CA plantation and the campus scheme against 21-22. So, Mr. PIO, can you hear me? Yes, sir. It's audible, sir. So, do you have the Form A of the appellant with you right now? Sir, I have it, sir. Can you tell us why informations were provided to the appellant till now? Sir, the appellant is Shri Tamshi Gungte, sir. Yes. Okay. On your So, part, why? Yeah. Sir, the hearing was held in the First Appellate Authorities Court Yeah. on 18th of December. Okay. After that, Later, sir, DFO's, sir, the PIO's response to the letter was that the information sought is very voluminous, sir. So there was a request from the PIO that the information asked be a little more specific, sir. For a specific work of a specific scheme and the area, if possible, year and the time, if possible, then it would be more convenient for retrieving the information. That was the request, sir, made. the first Executive Authority on 20th December 2024 had ordered you to furnish a copy of the document already furnished by him, by which means you, to the applicant within 15 days from the date of issue of this order, with intimation to this office, that means to the first Executive Authority, Mr. T. Rivas CCF. Sir, So after the order of this first appellate authority, the order of 20th December 2024, what have you provided to the appellant from your side? sir, in that hearing, in the court of the First Appellate Authority, the appellant was absent, sir. Firstly, secondly, even in then, it was asked that the appellant drop an application for specific work. After we receive a letter from the appellant, we will be retrieving the information. That was the information we had In that case, received. Yes, sir. have you retained to the appellant to cut short or like be brief or specific in his application? Have you written any letter to the appellant? After this, no, sir, not after this. But the इसका पता है, previous कोई लेटर नहीं correspondence था, was only that. इससे पहले एक लेटर मिला था सर, नो नो बताते कि ऐसे बोल के लिखा था कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक बताओ बोल के ऐसे लिखा था सर, इससे ज्यादा स्पेसिफिक और कहाँ से मिलेगा? Sir, नहीं तो हम in एक्चुअली that, लमसम में मानने से हम इंटर 1 साल का कैंपा स्कीम जितना है इसको हमको तो होना He चाहिए। has only asked for 1 year. The sir, there was scheme for 1 year. There was confusion in his application also, sir. One point was that he had sought for information regarding the third year operation of maintenance of CA plantation under campus scheme 2023-24. And later, inside that, he had also again asked for the construction of fourth year operation and maintenance. So the PIO was confused to provide
the information for the third year operation or the fourth year maintenance, sir. This was also one of the points. No, maybe that's another application. The application before me doesn't speak of anything like that, which you have stated now. He has the form A with me. I'll read it out to you. He has Yes. asked for the information pertaining to creation of compensatory afforestation plantation under campus scheme against the construction of 2,880 megawatt Dibang multipurpose projects by NHPT during the financial year 21-22. सर ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है नहीं तो टेम्पा तो You might नहीं, आप बहुत implications दिया होगा उस ऑफिस में इसलिए हम भी कंफ्यूज हो रहा है सर सर कौन सी लो Right now, sir, the form A I am holding is in which the appellant is Sir Tamshi Gungte, if I'm not wrong, sir. Tamshi Yes, Gungte. he has So he's he has confessing here that he has filed 3 applications before you sir, ओके सर of different subjects. sir. So can you find out the epic number is 79 79. There is some confusion because the form Yes, A yes. I am holding with me is he has sought for information on the third year operation of maintenance CA plantation No, campus but scheme. but the appeal we are hearing now is of a different issue, different subject. There is some confusion then, sir. Yeah, yeah, yeah. You have to be very clear on that. Actually, when you have a case, it is you have the honest to be very what should we say, very clean with the papers that you hold for a hearing. No, very Yes, sir. clear. So he has, I repeat, he has asked for Yes, sir. information pertaining to creation of CA plantation under campus scheme against the construction of 2880 megawatt Divan multipurpose projects by NHPC during the financial year 2021-22. Okay, sir. Sir, pardon for this, sir, because the information received by me from the office of the PIO is a little different. It's varying, sir. So I beg your pardon. And this one, the information sought, it will be conveyed to the PIO's office. Now itself, after we leave, sir. And probably, sir, within a very Can short you period of time, he'll be contacted, sir. can you write down now? Yes, sir, Shall I I've written repeat it, it? sir. Okay, okay, fine, fine then. Creation of So CA plantation. he has asked for the furnishing of copies of the total area created for CA plantation along with geotag and MIS report of the area. Second, Okay, sir. he has asked for total numbers of raised seedling, casualty, replacement along with proper names and photos of the plants. And also Sir. he has asked for nursery where the seedling is raised for replacement with photography. Certified copy of total length of fire line cutting along with the geotag and MIS report along with photo. Sir. Certified photocopy of inspection part along with geotag and MIS report. Or Sir. CTC of total area of weeding along with photocopy and MIS report. And then certified copy of total numbers of plantation watcher along with their identity card, Aadhaar card, and certified amounts of wages of the one plantation watcher in a month. Sir. CTC of payment of wages made to the plantation watcher along with bank transaction details of all the transaction made by the division to the plantation watcher. Certified copies of total numbers of plantation supervisor along with their I card or Aadhaar card. CTC of Sir. wages of the one plantation supervisor, like that. The payment details made, and then CTC of total numbers and total length of the fencing constructed by the division along with photo, geotag and MIS report. And copy of UC also.
and then certified LOC copy and certified photograph of all works, color photo from starting to end. Sir. Yeah, his on the face of it, I see his application is very specific. Sir. This particular application. And regarding the other applications that are with you, I can't say anything because I have not seen them. But the application that we are discussing now is very particular, very specific as far as me are concerned. Sir. So can you assure us, like, you provide the informations to the appellant on or before the next date of hearing? Next week, sir. Next date of hearing. Next date of hearing, yes, sir. Yeah, it would be We'll do that, almost sir. 2 months from today It'll be good, sir. because we Once- have next 31st July on or before 31st July. Okay, sir. So you assure us that your PIO will provide the information to the appellant on or before the next date of hearing, that is on 31st July 2025, 10:30 a.m. 10:30 a.m. Yeah. So Yes, sir. We want your name. Yes. Your name. Sir, my name is Tanga Murtam, sir. Tanga Murta. I'm serving as the RFO headquarters. Represented by Tanga Murta. RFO headquarters. Which division? Which forest? Kelang. Kelong divisions. Kelong Kelong Forest Division. division. Balukang. Where's the name? We have fixed the next date of hearing on 31st July. Yes, Take sir. note of it that you have assured the court that you will be providing the information on or before the next date of hearing. Yes, sir. I'll convey Yeah, the same, sir. the commission expects the positive response from you and a very sincere effort from your side. इतना सारा जो थोड़ा पहले भी मेरा That is very obvious. वो तो very obvious है. उसको तो कोई ऑफिसर को बताना भी नहीं है ना. नहीं सर ये लोग ऐसा है आपका आप कितने एप्लीकेशंस है आपका पुलिस डिपार्टमेंट का अंदर? थ्री. तो अभी तक तो सर अभी तक आपका ये कमीशन का अंदर में कितना अपील्स है? 80 प्लस ऐसे में होने से सर्टेन 1, 2, 5, 10 को हम लोग देख लेगा, लेकिन टू मच होने से हम लोग फिर उसको we have to dismiss it. कुछ राइट है बोल के तो you cannot abruptly use your rights also. No. मेरा सर जो जरूरी है those which are in public real public interest ना वो सब में आप कीजिए. उसे vested interest का सर आने से सर मेरा एप्लीकेशन में आपका मुझे ऐसा दिखाई नहीं देगा कि उस दिन हम डिसमिस कर दिया. वो JJM नामसाई का यहाँ से आके करता है. कहाँ होगा वो? किसने पब्लिक ऑफ नामसाई पब्लिक सेम पार्टिकुलर प्रोजेक्ट अगेंस्ट में टॉपिक होता है हमेशा हम कभी मैंने वो पब्लिक इंटरेस्ट वाला मैटर्स में कीजिएगा. बट कोई है ना कि you see now you are saying you have 55 appeals here. तो आप प्रोसीजर तो नहीं हो सकता है पूरा सारा अरुणाचल. ऐसा तो नहीं है और सर ये सब चीज का यहाँ में बात करने के लिए तो मेरा हिसाब से कोई एप्लीकेबल नहीं बनता है मेरा हिसाब से. मेरे हिसाब से बनता है बोल के हम बोल ये जो मेरा कन्वीनियंट का हिसाब से आपका कन्वीनियंट का नहीं. वी हैव टू अपहोल्ड द लॉ आल्सो. हम लोग को लॉ को भी अपहोल्ड करना पड़ेगा ना. अगर हम ये इसका गाइडलाइन को हम छोड़ के किसी को अगर हम मेंटल हेरेसमेंट दे रहे हैं फिर यू कैन टेल मी कि सही नहीं कर रहा है क्योंकि हम आज तक किसी को ना फोन करता है ना कुछ बोलता है. हम आई एम ओनली डीलिंग विद इन्फॉर्मेशन. कोई आज तक हम मेरा पास कोई इतना किसी का नंबर भी नहीं है और वो लोग कॉल करता है. अभी कमीशन हम लोग का जो सेंट्रल ये इंफॉर्मेशन कमीशन है वो बोलता है कि ऐसा रेस्ट्रिक्शंस भी अभी लागू करना है कि एक आदमी जाके गुजरात गवर्नमेंट को ऐसा परेशान कर दिया. मैं कुछ सामने भी देखा है वही तो उसका तो सर ऐसा है कि कंप्लेंट भी इतना आया है कि मैंने हेरेसमेंट दे रहा. वही तो
तो मेरा तरफ से तो सर आपको ऐसे महीने से आपको लगता है सर जो आप एग्जांपल दे है सर किसान ने तो एक भी कर दिया अभी नहीं नहीं सर पता नहीं क्यों और बिग फिश कंडीशन होता है होने से हम भी सही हम भी क्यों सर लो से आगे जाए तो उसको उसका तो हो गया तो वो अभी अभी ये है EERWD जीरो का सर ये भी मेरा है जीरो का उसके बाद तो आगे हो गया हम भी समझता है ऐसा नहीं ये आप तो खूब बात कर रहा We है as the commission are here to see that the act is used properly, यस सर the act is not abused. ऐसा है, the PIO shouldn't be misusing you or you नहीं shouldn't अगर be सर ऐसा उसी के लिए हमको देना बाय माय क्या नेम ना अगर आपका पास कंप्लेंट होता है कि या तो आपका कमीशन में जो कंप्लेंट आएगा कि बाय माय नेम पर्टिकुलर बाय माय नेम की ये आदमी जो हम लोग को फाइलिंग करके हैरेसमेंट दे रहा है यू कैन सर स्पीक मी लाइक दिस देन तो हम भी एक्सेप्ट करेंगे सर ठीक है आप देखो ऐसा है appeals तो वो तो सर अरुणाचल में कितना डिपार्टमेंट आपको आइडिया है नहीं, इसलिए तो हम लोग अभी और नेक्स्ट में है कि तो ज्यादा डिपार्टमेंट है अगर सब ब्रांच को हिसाब करने से एक महीने से बन गया एप्लीकेशन जाने से सर मेरा 500 होगा ना सर हिसाब से बोलने से अच्छा, इसमें बताइए आपका इसमें क्या है कोमे में है वो में सर जो आप मांगा है में सर इसका फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी का हियरिंग का ऑर्डर क्या है सर हियरिंग तो उसमें वहां से डिसमिस वाला ऑर्डर हमको मिला था हाँ क्यों क्योंकि हम ऐसा नहीं किया करते ऐसे ही करना चाहिए वो लोग का ऐसा है कि सर कुछ कुछ जगह में देखा है मतलब नहीं करके भाई पोस्टल रजिस्टर में बेचता है तो जब तक हमको मिलता है वो कौन चुका रहता है तो चलेंगे कौन कौन से मतलब मेरा तो नंबर क्लियर का कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है जो उससे व्हाट्सएप भी है तो एटलीस्ट उधर में तो आपको फॉरवर्ड भी कर देना चाहिए मेरा हिसाब से ना तो नहीं करके लास्ट में वो लोग रजिस्टर पोस्ट में भेजता है तो मेरा एड्रेस में आते आते वो लेट हो जाता है तो डेट को चेक करता है तो ये डेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है PIO what the present what the present the event states that this is appeal first appeal and the first appeal authority was dismissed because he could not attain the hearing on the appeal authority. That's the reason that we referred this appeal to the commission. इसमें बिल्कुल थोड़ा भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए सर ये वो PMGS का सर इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिला इसमें कौन था सर ये चीफ इसमें क्या था ये वहाँ का एप्लीकेंट आया ही नहीं पीआईओ आया ही नहीं सर ये हम how, थोड़ा confused how हो गए। they could dispose or dismiss the appeal. नहीं सर डिसमिस नहीं डिस्पोज नहीं हुआ है जो It's still there in the first हाँ। appeal authority. अभी तक है सर तो अभी Then how come it has come to us when सर एज पर माय नॉलेज मेरा सर जो काउंटर में जो आप डेली करता है वहाँ वहाँ में दे सकता है सर नॉलेज का हिसाब से ऐसा है कि वो तो हम लोग को गाइड भी करता है बीच में जो हम लोग गलती करने से उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर हम जब फर्स्ट एपिलेट को फॉर्म सबमिट करता है विद इन 30 डेज में वो डिसमिस होना चाहिए या हाँ मैक्सिमम 45 डेज तो उसका अंदर में हमको ऑर्डर या कुछ जजमेंट पास करना चाहिए सर ये मेरा ये अभी तक उधर चल रहा है मतलब ये एप्लीकेशन सर आपको मेरा डेट भी दे दी अरे इसका फर्स्ट एपिलेट का हम यूनियन को हम जमा किया था नवंबर को तो आज तक चल रहा है ये आउट ऑफ लॉ हो गया ना सर it's आपका डेट है 18/11/2024 ना डिलीवर हुआ है लेकिन 2011 को तो 2011 से 2011 सर अभी चल रहा है सर आपको बता रहे 2011 से डेट रनिंग होगा जी सर 2011 से आप क्लेम की 18 को है तो वो हम बोल रहे हैं तो 2011 से उसका जो ऑर्डर का जो हियरिंग का कॉपी मेरा पास है उन्होंने हियरिंग कराया ये 26 दिसंबर को एक बार हियरिंग कराया अरे नहीं 26 में ये हाँ 26 में एक बार हियरिंग कराया था 30 में अरे या में ना
और ये और एक बार कराया था अप्रैल का 16 तारीख को। उस दिन ही कराया। हम ही अटेंड किया था, किया है सब आया नहीं। 25 साल का था हम दोनों। पीआईओ को सुन के देखता है नेक्स्ट डे के एब्सेंस में क्यों इसको एब्सेंस ऑफ द पीआईओ it is a job but we next day saying someone the píaió dealing with that's what thing but that people create interference. सर सर एप्लीकेशन स्पेसिफिक वाला क्वेश्चन है सर। उसको तक भी वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं सर। वो तो मेरा ड्यूटी है ना। Question the information. You cannot ask questions. Sanglanka. संगम का हम थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें। हम भी गए थे आपको इसमें उनको आप तरह किया हो गया। बताइए क्या सर पहली बार मिली सर। ये क्या है आपको ये तो हम परमिशन करके तो आज तक बात भी नहीं है कोई तो हम कभी मिला नहीं। अब make the right Yeah. iris Or report. then I written him on 9/11/44 an amount of 144 years. तो मिला नहीं है तो हम well कोई परफ्यूम्स recently for First, it was reach is not but then उसने हम बार बार इसलिए हम आगे बता दिए थे सर। हम well sir hearing this for 16 January 25 in the day news few months ago. It was not young yet. after ये 3 times why you couldn't attend court? नहीं सर आप लोग यहाँ में हर दिन हियरिंग करा रहे हैं तो आप पहले बोल रहे थे हमने बता दिया ना। It's not the case. That cannot be your answer. No, you can defeat सर इसका जो someone. हियरिंग्स का जो चलन का जो रिस्क बोला है ना सर हमको मिला नहीं। अगर if हमको मिलता तो हम आपको नहीं पता। अगर हमको मिला नहीं है आपको नहीं मिला है बोल के तभी हम पर सप्लाई पास किया है। दिया है बोल रहा है हमको मिला नहीं है। अगर आप हमको Do you have the records that the electors were perfect to him? If you have the records to be जितना भी लेता है ना वो हमको मिला है वेतन। हाँ, जो चलन का जो बात किया ना उसमें हमको मिला नहीं है सर। इसका तो मैं जरूर कोशिश कर देता इसका हम सर
They should have brought IQ the year to the हियरिंग का तो मेरा पास नहीं है, हाँ वो तो हमको बाय पोस्टल भेजा है, तो भेजा ला थोड़ा लेट भी पहुंचता है कि नेक्स्ट टाइम सब्जेक्ट को मनाए सर सर इसलिए हम बोला है तो आपका लेट hospital free game मुझे टाइम पे हमने कोशिश किया था कि आपका फेलियर से the first appellate authority decided to dismiss your case, which is genuine, and then he has the right. So when you are at fault, you cannot be a crybaby and come to the higher court. No, this time we'll uphold the uh, decision judgment of the first appellate authority, and we will dismiss your appeal with liberty given to you to file a fresh application again, not to commit like that. When you are being called by a court, the first appellate authority is a court in himself. You shouldn't be एक्चुअली सर ऐसा है ना, यहाँ avoiding पे जो भी उन्होंने हमको भेजा है whatever reasons be it. तो आप खुद ले जाने से भी किसी वकील को आप बेच सकता है या नहीं सर, किसी दोस्त को बेच सकता है जाने तो सर हमको हम नहीं जा सकता, ऐसी बात तो नहीं है, पर ऐसे कि हम किसी के लिए जाने से हर एक चीज को हम डिस्कस भी कर सकता है, हियरिंग भी हो सकता है। तो हमको क्लियरली शुरू में बता दिया कि हम जब जब हियरिंग जाने के लिए माने या में हियरिंग होता है या तो आपको आपका लेटर लेट से मिल रहा है, जबकि आपका यहाँ में जनवरी में तो हियरिंग हुआ था, अब मेरा यहाँ कहीं में केस चल रहा था, तब आपका नोटिफिकेशन आया है। The first appellate authority. The chief engineer है वो engineer western नहीं, ये तो sent notices to the appellant to present with the training on सर ऐसा नहीं कर सकता है क्या? हमको चालान को डिपॉजिट करने दीजिए, आप नहीं नहीं लेकिन कैसे I have to respect the orders of the first appellate authority. No. वहां से सेटिस्फाई नहीं है बोल के तो आपका पास आया है सर, आपका गलती के कारण से आप कैसे सेटिस्फाइड नहीं है पर हम गलती चलो आप इनका हाँ। लेटर को नहीं मिला है, चलो ठीक सर। हुआ है इसके लिए आप फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी में किया है वह हियरिंग आपको बार बार बुला रहे आप नहीं जा रहे तो वो किसका गलती है नहीं फर्स्ट हियरिंग में तो सर and then हमको he is stating before the court that he has been coming with information every time in every hearing you to give it to you in person but you are not here प्लीज कर सकता है ना सर, हमको इतना लेट लेट में लेटर भेज रहा है तो व्हाट्सएप पे नहीं करता है तो अभी हम क्या करें मालूम होगा ना सर, इंफॉर्मेशन लेके आया सर, इंफॉर्मेशन को तो कलेक्ट करने दीजिए ना सर। नहीं वो तो नहीं होगा आप प्रेस फाइल करोगे उतना लिबर्टी तो मिलने से कहा हो तो सर ऐसे होने तो आपको ही फिर हेरेसमेंट मिलेगा भाई। होगा कुछ नहीं है वो ना यहाँ तक मैंने norms and procedures in the law. तो क्या है कि सर इंफॉर्मेशन या तो कोई दूसरे को सजा देने का केस है ही नहीं यहाँ में, इसलिए भी है सर, ऐसा नहीं है इसलिए तो हम करा What the party हम पैसे terminating the list yeah. सबको हमको ऑफिस तो किया है वहां से आपको कभी फोन नहीं आया, तो वहां से फोन आने वाला इसका आता था, व्यक्तिगत से फोन आता था सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां से तो आपको सारे व्हाट्सएप भी भेजता था, वहां तो हम ध्यान रखते उनका प्रोसीजर जो है बेहतर कर दो डेट बार होता है, हम तो कोई मशीन पता नहीं है ना सही बस होगा वो enjoy. Did you know
उससे तो हम मान सकते हैं इधर तो हम क्या किया we negotiate with them. They feel like by like public system, quick media. सर मतलब ये डिस्कोर्स ना सर It is discreet. मतलब फ्रेंड्स से फिर With a liberty, if you want to try, you पर एक बार हम ऑर्डर तो दिया है तो पर जो भी हो क्या ये लोग की गलती कर ऐसे ऑर्डर देने से अच्छा hey, kana. कर दो हम तो Next, Makes a P58 and 25 plus sir, you signed her. tiempo shalom. Sí, tiempo que no me vale. Yeah. Ya caramba. Before. Tiene online me así. Sir, good afternoon, sir. Yeah. Porque no. Entonces, Yeah. तो ये तरह इसमें आपको फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी का ऑर्डर ना हाँ क्या बोल रहा हूँ सर उसमें ये केस में फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी में हियरिंग नहीं किया हाँ मेरा उसमें भी हम जो ये हियरिंग नहीं किया मींस आप फाइल किया था फाइल किया था हाँ हियरिंग नहीं खुदा नहीं किया नोटिस पे इशू नहीं किया लेकिन उसमें मेरा और दो केस था वो वाला को तो हम लोग एक बार हियरिंग खुदा किया था क्योंकि मनोबा में बीसीसीएल का सीसीएल ऑफिस में हुआ लेकिन ये वाला केस में तो नहीं हुआ था आप फाइल किया था फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी में तो क्या तो साहब उधर में पूरा इनक्लूड किया अवेट हाँ कितना पड़ेगा कौन सा डेट होता है 13 जनवरी को फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास है ना उसका रिसीप्ट कॉपी नहीं है इधर पे सर कुछ होना चाहिए हम पूरा तो नहीं फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी का ना एक रिसीप्ट कॉपी नहीं सर पता देख रहे हैं हम यार इसमें कौन से भेजा था पोस्ट से भेजने से आपको कितना दिन में मिलेगा वापस क्या तो संडे है सर तो लंदन क्या सिक्कानगर का पोस्ट ऑफिस से भेजा था डिलीवर तो दिखा रहा है डिलीवर first step wait first step authority Dimension क्या है first step authority का CCA हाँ सीसीएल सर ठीक उसमें तो वो ठीक होने भी Western Arunachal ये सर के लायक से तो नहीं तो Western Western बात करते हैं second second level two post instead of the seat of the FPD FAA in they kept hearing within the stipulated time provided by the film plan to purpose of the e-commerce permission.
So, Mr. Piario, do you have the Form A of this instant appeal that we are hearing now? Yes, sir. And So the apple. he has almost asked the same information. State Kempa AOP Volume 1 and 2 23-24. Tengo entendido que las Ah. 26 lakhs. Eso es la 12 crores 26 lakhs, yeah. NOC for the month of March 2024 to DF4 loan for implement of that. Then in the CA, WLM and NPB. So have you gone through a list of details of informations that he has asked from you? Yes, sir. The appellant is Riya Taram Penge Tahar and Lokam Nandu, sir. Yeah. The appellant. And the details they have asked is relevant information regarding the fund amounting to 1,226.88924 lakhs of LOC for the month of March 2024. So even regarding this, there was a correspondence from the PIO to the CCF requesting that this information sought is again not very specific. It is for the entire financial year, sir. This is for not for a particular range of a particular area or particular scheme, or like the previous one, the particular it was against the Debang multi-purpose project 2880 megawatt. So this is for the entire financial year, which is again very voluminous, sir. And the request from the PIO to the CCF, the first appellate authority was regarding this. This PIO had written, sir, that it is very voluminous and it cannot be furnished. It'll within that stipulated time. So after that, there was a letter from the CCF, the first appellate authority, for hearing on December 18th, I suppose, sir. After that, there is no further correspondence, neither from the appellant nor from the first appellate authorities. We didn't receive any correspondence. So the last request made by the PIO is very clear, sir, that the information sought is very voluminous. No. Have you written the same to the applicant also? Yes, sir. On which date? This is 19th. 19 October, sir. September, October, 19 October. 24. Yes, sir. There is this office copy. Even to the appellant we had written, and differently we had also written requesting to the first appellate authority, sir, on 1st of November 2024. Which can be provided between legislative time. With short or this big for the PIO apply for PIO का लेटर को मिला है? एक तो सर हाँ हो तो मिला था लेकिन वो तो सर ये तो स्पेसिफिक उसको स्पेसिफिक नहीं है बोल सकते सर बहुत वॉल्यूमिनस है होता है होने से नहीं हो रहा सर ये तो नहीं वो बोलने से होगा वो कंसर्न ऑफिसर है ना आप कंसर्न ऑफिसर नहीं है वो बोलने से ना होगा आप बोलने से कैसे होगा सर ये तो एक साल से बनना है ना जैसे कि हम 2020 से लेके
ये 2024 तक भी मन सकता था, लेकिन ये पीस है, आप लोग का होटल में कितना अमाउंट गया है, कितना सेंक्शन ओके, सेंक्शन होटल मेरा पास में पूरा है। ये तो 1 साल का ही से मंगाया, आपका याद है भी तो आप भी तो बोलता है ना, ज्यादा इतना सालों साल से मिलने से वो जो मैंने ये जो हम तालुक लोग प्रेस में हम लोग वही बोल रहे एक हैं अच्छे से हल्का ये नहीं होता है वो। चलो सर ये 1 साल कितना होता है ना, उसमें स्पेसिफिक नहीं बोलता है, तो कितना सुन स्पेसिफिक है, आप बताइए। Mr. PIO, can we come to the Sir. form A? Number one में आप details of information required में furnish the TS of DPR, work order copy, estimate, UC. When the works have been executed by now, I think all the informations that are asked in serial number one should be with you. And those informations I think would be of single pages only. So actually, the request made by the PIO is even not clear to the appellant, it seems. So the thing is, for every item of work, there is different executive body. There are 6 ranges in this entire division. And the works, for example, one range has been given 10 or 15 item of works. So for every item of works, the financial concurrence is different. So in here, sir, I'm not sure, but it will be more than 100 item of works. So I don't see if we think this is humanly possible, sir. So he has asked informations under the schemes like CA, Yes, sir. WLM, and NPV, Sir, which are the sir, hence, sir. components of state KEMPA. Sir, So under KEMPA, all these schemes are there: CA, WLM, and NPV. yes, sir. CA is compensatory afforestation, sir. Works, Yes, for example, that previous one, multi-purpose, yes, yes, yes. this one. And And WLM, this must be wildlife management. I'm not sure, sir. But NPV is the net present value is there. This is under Campa again. So, sir, my point here is, which was requested by the PIO, sir. Under this entire financial year, there will be more than 100 item of works. There will be 30 to 40 artificial plantations. There will be again added natural regeneration, ANR plantation, more than 50. There will be some soil moisture conservation, check dams and all, more than 20 or 30 maybe. So for entire item of works, it is not possible, sir. For if no, he's a little more specific, sir, maybe for no. this financial year, if he asks for CA or maybe artificial plantation, or maybe if he's specific that this 100-hectare plantation has not been done, so we can be more specific and it will be more convenient for us. So in the BFC, the number two, he's asking the information to furnish name of work list with geotech report. The list Sir, of your works that you have taken up. sir, So if you have taken up 100 works, he's asking the names of those 100 works. Only the sir, name, get it. only the names with geotech. Sir, it can be done. Again, third, third, third also read the list of all work order, supply order copy with details of payment like checkbook, counterfoil, leaf, demand draft, banker check, deposited challan, and BFM as transaction details as according to the amount mentioned in work order sanction order. So Sir, herein you can give to the applicant the some total of money that was given to you and the sir, breakup of that amount which was paid to the contractors or beneficiaries. Like this much sir, of amount was paid to the beneficiaries and this much of amount sir, was paid to the contractors. That would run only one page, I think, because you cannot be giving the bank details of the beneficiaries. That would be again illegal to keep the counter funds and all of someone else's bank details and all. No.
But you should Yes, be sir. giving the total amount of money that you received for that work, the total amount of money that you spent in executing the work, and then this much of like this much of amount was paid to the contractors, this much of amount was paid to village beneficiaries, the Mm, benefactors and all. So the mm. sum total classification should have been given to him. That won't That be is too also more cumbersome specific. also. Yeah, Yes, sir. that won't be too cumbersome also for you. 3, Sir, 4 is give the description of work, supply order, quantity, rate, per numbers, amount with cash memo, money received of every materials. Yeah, whatever the materials we have procured for some of the works is asking those informations only. So those informations that you are qualified to give, no, you give those informations. Those informations which you cannot give, you have to write it back to him that these are third party informations or these informations are exempted from us, exempted that we cannot give it to you. Like at least if you can reply to him on a paper, no, things would be sir. looking good and things would be really, really uh, not unnecessarily lingering or pulling on the time with the appellant also. But when Yes, you sir. say that the whole thing is too voluminous, that also is not an Yes, sir. answer. No, you also have to look Yes, into sir. it. So now, in the fourth, fifth years, ask for Xerox copy of all the farms, selling license, and contractors, enterprise with its bank account number, checkbook, counterfoil, beep, challan. At least here also in the number 5 also you should have given the names of the firms and the trading license that were engaged by you. Mm. Say if the Get it, sir. account details and all. Account details should not be given. Furnish the NOC copy of head Gambura and Gamburis from concerned villages. का इधर में एक तो है ना अमाउंट डिपॉजिट अगेंस्ट द रॉयल के जीएसटी उसको भी देना पड़ेगा ना Ah, जैसे कि जो बैंक में ah, है ना yes. The amount of GST deposited by you through the department. No. Which one, sir? वो Number 5, he has Number asked five. for, yeah, in the last against GST deposited amount against GST royalty to government account. The GST and the royalty that you have deposited to the government, that Okay. that piece of information he's asking for. And now the NOC of the Gambura and Guris of the villages where you have executed the work. If you don't have, you have to write back. We didn't obtain any NOC, or if you have done it, obtained it, you have to give him. Give the Get it, copy sir. of legal agreement between contractor, landowner, and department for carry out magistrate countersign, HGV countersign, and seal. In number 7, if you have those agreement between the contractor or the landowner, Mm. is asking that piece of information which has been countersigned by a magistrate or even signed in front of the Gambura of that very particular area. 8, furnish name of contractor of what firm, enterprise, owner, and proprietor to arrange for yeah. So a single line, like if he's connected, yes, he's connected in such a way. If he's not connected, no, he's connected with the RFO or the DFO. A single line answer will be. Oh, total area is square of lane with longitude, latitude of area, exact location of work area with LPC copy. LPC copy तो नहीं होता होगा. सर होना चाहिए कुछ भी बात किया है एलपीसी बनाना पड़ता है ये जरूरी होता है तो जिसमें काम करेगा उसमें LPC होना पड़ेगा. हाँ वो जो
नहीं ये जो प्लांटेशन का हाँ जैसे कि जिस जगह में जो प्लांटेशन करेगा ना तो उसमें मैंने एलपीसी होना पड़ेगा नहीं तो प्राइवेट लैंड में कैसे उसमें प्लांटेशन करेगा total area of land with longitude and latitude, exact location of work area with LPC copy. If you have any LPC copy, This is, sir, this is again very cumbersome, sir. Like I yeah. said, for every plantation there are about 8 to 10 geocoordinates. So if there are 100 plantations, it will be 100 multiplied by 100, 10. Hello? The location of the work area Yeah. Oh, sir. with LPC copy, if any. Hello, sir. Yes. Hello, Can you hear sir. me Am I now? audible, sir? Yes, Yes, sir, I can you're hear you, sir. audible. Sir, I was just giving my some humble submission, sir, that even that number 9 is again cumbersome because he's asking for all the longitude and latitudes and geocoordinates of 100 plantations. So for one plantation, we have for the entire polygon, we have 8 to 10 geocoordinates. So 10 multiplied by 100 will be 1000 geocoordinates. You might be Hello? having those informations with you in your file now in the office. It should be there, sir. Just submission was it is voluminous and hence prayers, sir. When you receive cash memo, challan of all items, contract file. ये इसको छोड़ दे सर ये आगे निकल और ये तो ये वाला सेकंड वाला जो There's a payment list. आगे भी मांगा यार. सर कॉन्ट्रैक्ट वो ये जो होता है वो जो सिग्नेचर भी करना पड़ेगा तो शायद तुमने कितना रिसीव किया है वो वाला तुमने रिसीव टेस्ट भी होता है Under serial number 10 need not be furnished to him. Number 10 Sir. serial number 10 need not be furnished to him. And he has asked for details of payment made to contractors, firms for their enterprise. Cash book statement का मतलब क्या? सर एक जो ये जो एंट्री जो होता है ना कितना में जो अमाउंट का बिल बनाया कितना ये जो बिल का भी तो सीरियल नंबर में एंट्री करके एक केस बुक में क्यों होता है ना वो का अब ये पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी है Do you have something like cash book statement? Facebook, sir, it's there, sir. It's maintained by every range, sir. Okay. So in that cash book, do you record the details of payments made to individuals? In the cash book, sir. Yes. Yes, the cash book, we do keep the record for the CA, the amount received and where we spent it Yeah. with regards to, yes, memos and all. But again, this one is for a specific year, it is again very voluminous. सर ये बिल For this, hence, I was the PIO's request was this, sir. For cash book is a big bunch of book. That cash book statement, what are the records that you maintain? Do you maintain individual payments made to individuals or the farms or contractors? This regarding the work, sir.
No, 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 no. Under the cash book, what do you maintain under cash book? It is for each item of work that we receive the payment, sir. The payment received, the CA received the all the check numbers and all it is mentioned. The And money hence, paid, money paid to contractors also you maintain in the case book. yes, sir. You furnish the information those that are not exempted for those that don't jeopardize the lives of any of the beneficiaries or contractors as far as you concerned, because you would be the first one to know if this piece of information be shared with a third party or some other person, you might jeopardize the life of that very person, right? Exactly, sir. So you provide the informations those that won't be endangering the life of an individual. So that the wisdom lies on you to decide it. Yes, sir. So number 12 also you don't need to give the informations. Number 10 and 12. Yes, sir. Give name of officers executed, yeah, handle. Yeah. He's asking the name of officers and officials who executed or handled the work, prepared the DPR, first and final bill and made payments. Just list officers involved in the work. Sir. And then 14 is asking government notification, cabinet order, RFO. Now, to prepare a DPR, you get the nod of the cabinet. I'm not sure of it, sir. I think the No, proposal you don't is, need to give it. ये सुपर प्लस ये है इंफॉर्मेशन सीख करता है. I don't know. ऐसा कोई Yes, होगा sir. भी नहीं ना कैबिनेट को पास करके वो रेंज ऑफिसर वो डीपीआर को बनाओ करके तो कैबिनेट तो सिटिंग कभी नहीं करेगा ना. Number 14 also you don't need to give the information. Give all the details of fund amount transaction to RFO account Light. from GP Light. account. Number 15, give all the details of fund amount transaction to RFO account from DFO account. For a single year is asking how much of money was transferred from the DFO's account to the RFO's account. The sum total of the amount of within the financial year 2024. MB with page number, hand received and page name. Measurement book. Okay. Hand received. So you might obviously be having a measurement book Yes, sir. We have, sir. wherein it would be having a page number in each page. And what is the We meaning have. of hand received and page name? Number 16 में ना only the details of MB with each number be given. ये जो rest information sought are declined. Mention various deduction of amount is percent from contractor. When you prepare a bill for a contractor or for any beneficiary, there are certain government deductions, right? Sir. So he's asking those informations under which head or under what name the deductions are made. He wants those informations only under 17. Give Sir. certified photocopy of
give क्या meaning है? Give Sir, certified ये जो photocopy of work all site- works by वेबसाइट लगाना चाहिए था concerned officer. हाँ, सर। Give certified नहीं, सर, photocopy ये of जो all works. जहाँ भी जो काम किया उसको जो फोटो खींच देना एक सर्टिफाइड करके वो रखता है बिल बनाने से बिल पेमेंट करने से पहले जैसे कोई जो काम करता है ना उसका एक सबमिट करता है वो जो सबमिट है ये जो हम वर्क से डाला है ना साइट करना चाहिए था वर्क साइट कैसे Inspection, photocopy of work site, other work. 19 is asking the photograph of the work site before the work started and after the work started and after the work was finished. Do you have all those photographs with you? We'll have to seek information from Yeah, all see, the respective ranges, sir, because we're not sure if they have kept it. furnish the billing detail sheet copy in particular RFO wise. ये क्या है? Billing sheet copy क्या है? ये डिपार्टमेंट में नहीं होता है सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चार्ट बनाता है ना डील डील का एक जो कम का भी उसमें अमाउंट का भी डिडक्शन का भी और ये वर्क नेम और वर्क का भी ऐसे होता है ये लेकिन ये देखो का डिपार्टमेंट को आपको मालूम नहीं Okay, 20 ko you don't need to provide the information on 20. ये दोनों को सर ये 21 भी ना. ये लोग का डिपार्टमेंट तो थोड़ा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अलग है If you have conducted any tender in the works, in the same works, under the same schemes, if Sir. you have published any advertisement in any of the newspapers, local or national, Sir. and then after that, the selected firm and contractors, the names of the selected firms and contractors, and the award letters. Up to the award letters, if you have the copy of the NIT and then the date of NIT, the tender plotted, total number of bidders or a total number of firms that applied for the name of the firms or the contractors that were selected for the works. That much of information you provide to the applicant. Rest others too, it's exempted. Bank details, PFMS transaction details, they are all exempted. Sir. So here in all, you provide if you have plotted any tender, the details in the sense that the advertisements, if any, that you have given out in any local newspapers, and then the name of the contractors or the firms that participated in that tender, and the name of the firm or individual that were awarded the works. That much only. Rest number 22 will go. The details of checkbook, foil, continuity, human PP, banker check, PFMS transactions, transaction details has to be provided by the applicant and declined as the requested. From both parties. The commission here were orders. The PIO provide the information pertaining to serial number 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 9, 11, 15,
16, 17, 18, 22. Or informations sort on the serial number 12, 20, 21. Exempted from providing the information. Okay. To provide information. Other coordinates. And think about what is it would be said needs to be. Can you write down the serial numbers of the informations that you don't need to give? Yes, sir. 21, 20, 20, 20. Yes, sir. 14, 14, 16, 14, 16, 14, 12, 16 का measurement को देना होगा 12. 12, 12. Yeah. Those informations need not be given, but the rest informations be given to the applicant on or before the next date of hearing, which is on 31st July 2025, 10:30 a.m. So serial number 10 and 11, sir. You said Yeah, it 10 will be dropped. also, and 11. 12 also. You don't need to give. And sir, number 10, 3, 12. Yeah. the And PFMS transaction details, yeah, no, bank transaction details need not be given. Yeah, serial number 3 also you don't need to give. Yes, sir. serial number 3 को नहीं इसमें आप ये मांगा है ये फिनिश का ट्रांजैक्शन कैसे आपको देगा नहीं इसमें 3 में आप मांगा है बैंकर चेकबुक हाँ वो तो पेमेंट डिटेल को तो मांगना पड़ेगा तो क्या हिसाब से पेमेंट किया उसको तो बताना पड़ेगा ना चेक दिया है ना केस बाय है ना अपना हाथ से दिया है ना इसमें be very specific. You don't need to provide information pertaining to PFMS transactions. Other except the Sir. PFMS transactions, you give the other informations. Get it, sir. Okay. So hopefully you'll be giving the information to the appellant on or before the next date of hearing. Yes, At least sir. you have Yes, sir. almost We'll 2 months communicate with the time with witness. you. Yes, sir. What we have done. The same. Okay. Thank you, sir. Yeah. Pick number 54. Epic 54, Vijay Taram, Ingia Tahar in Lokam Namdu, DFO and DFO Anjao. online DFO and अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत स्टेट होता हुआ जहाँ एक ग्रुप में मरता है बाकी स्टेट्स में एक में भी नहीं है ऐसा ऐसे ग्रुप में मरने के बाद क्या इम्प्लाई करता है डू यू नो दैट इट्स सो सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट इन योर एप्लीकेशन आपका कोई जेन्युइन इंटरेस्ट होगा तो इट विल बी सिंपली यू कैन फाइल से बता रहा है ऐसा सर वो जो हम अगर आ नहीं पाने से ना उसको स्टिचिंग करने के लिए फिर बोलते हैं ना स्टिचिंग करना है हियरिंग में अगर नहीं आने से लेकिन ये और ये हम लोग का चीफ साहब हम लोग सेंट्रल कमीशन लगता है इसको डिस्मिस कर दिया डिस्पोज कर दिया
लेकिन ग्रुप में वाला यहाँ में भी ये वाला चार्ज हो आनो का चीप चार्ज है। मेरा एक केस को संग्राम का वो जो डायरेक्ट डिस्पोज कर दिया एक ही हियरिंग में, बस हियरिंग में वो जो इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैंने तो आपको फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में आपको हियरिंग हुआ था? नहीं सर उसको नहीं हुआ, क्यों? पता नहीं मैंने हमको नहीं मिला है सर ये वाला। Claim delivered on 14th. कुछ नहीं 4 करोड़ का कुछ है मैंने 4 करोड़ की बचत करना। Are you the PIO connected? If he is connected, PIO. Hello, okay. Am I audible to you, sir? Yes, sir. Good afternoon, Okay. sir. Good afternoon. You are the PIO. Yes, sir. I'm Okay. Panja, sir. So have you seen gone through the form A of the appellant? Sir, actually, मेरा जितना मतलब ये है, ये क्या में क्या बोलता है आपका रिप्रेजेंट हमको डिनाई किया है बोल के ये बोला है सर। ये एक्चुअली जो रिसीव किया है ये रिसीव करने वाला जो सेक्शन का हमारा ये बाबू जो है सर, ये आरटीआई का जो है उनका तो उनका पर्स ये अक्टूबर में दिया होगा। उनका पर्स बेटा जो है मर गया, वो हमें इनके लिए हम टाइमली हमको नहीं दिया है, लेकिन पर्स जो चीफ सर से हमको मिला है, उनका जो जो ऑर्डर मिला है हम रेडी करके रखा है। जितना मेरा अवेलेबल है सर, ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, पूरा रेडी करके रखा है सर। करेगा सर ये मेरे The information those that are available with the office of the PIO have been compiled to be given to the appellant. आप अभी सब इंफॉर्मेशन जो आपके पास में वो रखा है आपको देने के लिए ये एप्लीकेंट को, आप एप्लीकेंट और एप्लीकेंट से कांटेक्ट किया है बाय लेटर, कोई कुछ लेटर भेजा है उनको कि आपका इंफॉर्मेशन रेडी है करके? हाँ सर, ये उनको चीफ साहब को तो हमने भेजा है ये उसमें अभी अभी हमको ये लेटर ये लिखा था, लेकिन ये हमको 22/12 में लिखा था। हम ये एफिलेटेड ये ऑथोरिटी से 13/12 को मिला था। वो हम मतलब ये में आज हम ठीक से देखा है तो सर ये पोस्ट किया है, मतलब ये पोस्ट सिंपल पोस्ट में किया है सर। नहीं, आप एप्लीकेंट को रिया ताराम को आपका इंफॉर्मेशन रेडी है करके आप एक कोई लेटर भेजा है आपका ऑफिस से? हाँ सर, ये मैं उनको बोला है ये को कौन सा डेट को आपने भेजा है? ये सर ये एग्जैक्टली हमको मालूम नहीं, लेकिन मेरा इशू नंबर ये था डेट सर ये 23/12/2024 23/12 को ये इशू था, लेकिन 2-3 दिन का आगे आगे पीछे होगा सर। ये हम भेजा था, ये पोस्ट में भेजा है, लेकिन यह सर ये बाउसर को नहीं भेजा है, ये डॉक्यूमेंट को नहीं भेजा है। तो उसके बाद में आज तक आपको ये रिया ताराम कांटेक्ट किया? आपका ऑफिस में आया? कांटेक्ट नहीं किया, पहले से कोई कांटेक्ट नहीं किया सर। ये तो बाय गॉड सर सर ये कांटेक्ट किया मींस जाके मिला है। कांटेक्ट का मतलब है कांटेक्ट नंबर नहीं होता है। कांटेक्ट का मीनिंग है मिला है। वो कांटेक्ट बोल से कांटेक्ट नंबर बोलता है। दैट्स अ वेरी वेरी वास्ट डिफरेंस। तो आप क्या कि वो बीच पे जाना है, लेटर नहीं मिले मिले जो किसी ने लेटर सेंड करके
purported letter sent by सर भी तो इनका जो एक ये ट्रेकिंग इनपुट होता है ना सर उसको भी तो बताना क्या बोलने से भी नहीं होगा ना वो आज तो वो आपके सामने बोल रहा है। तो आप सर उसको जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास में है ये एप्लीकेंट को बाय पोस्ट भेज दीजिएगा। हाँ होगा सर, ये डिटेल जितना डिटेल जैसे कि वो मांगा है उनको, तो कोई कोई किसी का मतलब हमारे यहाँ में ये भी चोट हो सकता है, लेकिन जितना भी अवेलेबल ये है डॉक्यूमेंट है हम फर्निश किया है सर, उसको हम के भेज पास देगा सर। ये आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन आप दे सकता है वो आपने देगा, और आप जो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है उनको भी लिखित रूप से ये कहना होगा कि इन ये इंफॉर्मेशन को मैं नहीं दे सकता हूं, और जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है उनको भी आप एक लिखित रूप में ये बोलना है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास में नहीं है। सर एक अच्छा से वो उसको इंडेक्स करके अच्छा से कंपाइलिंग करके भेज दीजिएगा। होगा सर। लेकिन फिर ये अनजाओ तो हम यहाँ का समझ गए पोस्टल सर। सर्विसेज बहुत खराब है। आने से भी 2 महीने ऐसे लगता है। थोड़ा समय लगता है नहीं, महीना। तो सर आपका नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का पहले में आप जल्दी से भेज दीजिए, सो दैट बिफोर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग द इंफॉर्मेशन at least reach the appellant here at Itanagar. का एड्रेस ठीक दिया है सर इस बार। हाँ ठीक है सर, मेरा लेवल पे कोशिश करेगा सर, जितना सकेगा सर। 31 जुलाई 10:30 AM को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। 31 जुलाई 10:30 AM। सर सर नोटिस इसमें कॉलोनी यंग स्टोर रिसाइट कैथोलिक चर्च 31 जुलाई ना 10:30 31 जुलाई 10:30 AM। सर Entry number 100 2025. Nga Ronya Basis BMO Zapolina. Submitting this one. Appellant. So it's time for that. So I'm presenting. And at the same time, friends, these are the records we have been received. Okay. Quick reference. पीआईओ ऑनलाइन है क्या पीआईओ? Then material que Represented by Boje. Okay. पीआईओ तो नहीं है। Come. You are representing Mr. Ronya. Yes. So he's the PIO. Oh, no. Appellant, yeah. Appellant. So he's also online, I think. DMO, DRCHO, Daprigo. The PIO absence without intimation of the commission. The reasons for his absence. And the appellant, SHRI yeah. Represented by Boje. That's okay.
for the commission that your client says that he has not received any information. Information we have received, only one information which is not been received is not the answer script of the examination. Answer script. And the selected of the selected candidates. And that is one number one. That is which is not been received. Received document is waiting list of the candidate that has been received. A copy of advertisement that has been received. And rest we have received. Only one document we have not received. So this is about an examination conducted. Yes. Do you have the details of what examinations? It was for nursing staff, nursing officer. It was a nursing officer. So your client had also appeared in the examination. Yes, I have also appeared in the examination. And while appearing in the examination, as per the examination, I have qualified the examination, written examination, and there was supposed to schedule to be held practical, that is the skill test. It was not held in the scheduled time, but after 10 days it was scheduled. Accordingly, I have a reasonable doubt. So therefore, No, if you are so my name has been kept in the serial number one as a waiting list. So I have a reasonable doubt. Therefore, you have to be given, yeah, yes. because you have the locus standi. As I was saying, no, there are people coming here without any locus standi. They asking the educational qualifications of somebody. That's not the the appeal states that he had appeared for an examination, nursing examination, selection for nursing office, yeah, examination, for which he has been made listed in the number one wait list. Waiting, right? Yes, wait list. For which कौन है मिशन तरह he क्लोज has, करो था he has applied for information to the mayor. वाशिंग मशीन ऑफ करो था And according to the list of information sought in the Form A of the document, all the information have been provided except the information in serial number A. Answer or It- this Yeah. answer sheet, Answer sheet oblique answer script answer of all the all the selected selected candidates. वेटिंग लिस्ट that is Yeah, that's what. In the absence of the PIO, the fact is not accepted, for which the hearing to give a fair chance to PIO if we held on a mistake for the commission. Which is send summons to the PIO from GMO oblique TRCHO to review for so-and-so district AP to be present in the next date of meeting, failing which necessary action will be initiated against him ऑफ करो बोला है तो according to the provision of the notice for the date of hearing will not be sent to the citizen as subject to the state of hearing and to the post to write the hearing. So when the PIO is absent and we cannot be attending
facts as well stated. No, maybe you are stating certain facts. Then again, we have to give him a fair chance. No, so, uh, if he has given you, or if he hasn't given, for which reasons, he might be reserving some reasons for which he has not given the answers. Your Honor, my submission will be only the question may be third-party information. Yeah. No, hearing so he's From the exemption clause, he does not apply. no. I fully very clear about it. Yes. Because he's a interested party who is asking for the script. No, he has the right. He has to be given, He needs to be- or else his chances are being curtailed. Yes. Otherwise, if it is delayed more, Yeah. I'll be Yeah. right, like anything. Yeah, okay. So, but we have so much of cases. Yeah. You also have heard that if a single individual has 55, 65 appeals. So that's why our dates were for almost 3 months. Yes. So we fixed your next date on 31st July, 31st July, 10:30 a.m. Yes. It's Your Honor, this related to the same thing. They have given confidence to whom they will approach. So they approach both authority. Actually, the same matters. Arising out of the same context, with the same subject matter. That's very club. One will be for the right to club. No, Maybe- club nahi karega. We will dismiss it because the same issues are here. Yes, already. In epic number 112, epic number 111 is dismissed because the same issue are the same parties, the same issue are already being heard under the 22. It is numbered as 112. Right. So we dismiss 111, we hear 112. Yes, anyone. It's all the same. Yeah. All the same. Very good. Okay. Now we can situation. Contact number लिखिए सर एडवोकेट का contact number दे दीजिए Nine.